Hello, students. So, we were studying the chapter 3 of the Human Geography book, and the name of the chapter is Population Composition. So, here in population composition, uh, we have studied the few some points already or some topics. The topics that we had studied were the sex compositions, means the composition of the male and female in the population, and what is its effect and how does it affect the other things. Then after that we have we have studied the age structure of the country or age structure of the populations of the particular region. So age structure means that the meaning of age structure is that number of people in the different age groups. So it indicates that if the population of the country or the populations of the particular region is the young population or the aged population, as we know that the population from 15 to 59 years is considered as the young population, and it is considered as the working population. So it all means the age structures of the population indicates the economic growth of the or the it is the indicator of the country's economic growth. And in the age structures, there were some pyramids. We had studied the three types of the population. One was the first one was the Nigerian population. It is the expanding population. Expanding population means the area where the population is expanding in this group or in this demographic type, the old population is less and the young population is higher. In this graph or in this picture, if you see, the bottom of the pyramid is expanded and the top is means it's shrink. So the top means upper part shows the number of the old population and the lower part shows the number of the people in the young population. These are the categories of the means here are these are the categories of the age group. So then there was another type of the constant population. In this type of population, the population remains means that the population remains same. The rate of the growth remains same, almost same, or it is means it's not increasing high or not decreasing at the large scale. Then there was the decline. Another type of the population in the age group was the declining population. In such type of the population, the young number of the young population is less, and slowly the birth rate or the growth rate of the population is either it is zero or sometimes it is negative. Now the next topic that we are going to discuss today is the rural urban compositions, the number of the people living in the urban and the rural areas. Now this is the division of the population based on the residence or the residence of the people. Means the people who are living in the rural areas is known as the rural population, and the people who lives in the cities or in the urban areas is known as the urban population. So now why it is necessary, ये क्यों जरूरी है कि हम पॉपुलेशन को अर्बन एंड रूरल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, इसका क्या importance है. So it is important because जो means the lifestyle of the people, the occupation of the people depends on the place where they live, and it also means the livelihood and the social conditions also differ from the urban and the rural population. जो क्योंकि अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है, उनके लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होता है, उनके कमाने के तरीके में डिफरेंस होता है, वो किस तरह से उनकी सोशल कंडीशन है उसके अंदर डिफरेंस होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. द एज सेक्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर शेप.
the age, sex, occupation structure, density of population, and the level of development vary between the rural and the urban areas. Means the age, sex, and occupational structures. The age structure maybe is different in the rural and the urban population. Sex or the number of the male and female is also different, and occupational structures, the occupation, the work the people do in the urban is different from the rural. जो गांव में लोग काम करते हैं वो सिटीज से अलग होता है, तो सिटीज का जो ऑक्यूपेशन है या जो काम करने का के फील्ड है या जो सेक्टर है वो भी अलग होता है. इवन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर area of the particular means in the 1 kilometer is the density. तो डेंसिटी सिटीज के अंदर ज्यादा डेंसिटी होती है, गांव के अंदर कम डेंसिटी होती है. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी, और जो लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो एरिया का डेवलपमेंट का लेवल है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. वो भी रूरल में और अर्बन में अलग होता है. सो दैट इज द दीज आर द सम. एंड now different countries have the different criteria for deciding the rural and the urban population. मतलब हर देश का अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि जो रूरल एरिया किसको कहा जाता है एंड अर्बन एरिया किसको कहा जाता है. जैसे हमें बहुत सी बार डाउट होता है कि जो ये छोटे टाउन्स हैं ये अर्बन में आते हैं या रूरल में आते हैं या फिर ये किस तरह में आते हैं. तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. इन जनरल टर्म्स, अगर जनरल टर्म्स में देखें, रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. अगर जो जनरल टर्म्स में, वैसे जो एग्जैक्ट टर्म्स हर कंट्री का अलग अलग होता है, लेकिन जनरल टर्म्स में होता है कि रूरल एरियाज उन एरियाज को कहा जाता है, या रूरल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पे तो जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होती है. प्राइमरी एक्टिविटीज मीन्स जैसे फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. तो जहाँ पे पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आप फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, इन एक्टिविटीज में अगर एरिया लोग ज्यादा कर लोग इन चीजों में एंगेज है तो उसको रूरल एरिया कहते हैं. पर इन द अर्बन एरियाज जहाँ पे पीपल आर एंगेज इन द नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज जस्ट लाइक द सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, टेरिस्ट्रियरी एंड द रिसर्च एंड द अदर जॉब्स. तो जहाँ पे पॉपुलेशन इन एक्टिविटीज में होते हैं उसको अर्बन एरियाज कहते हैं. Now there is the urban sex compositions of selected countries. नीचे एक पिक्चर है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज का अर्बन सेक्स कंपोजिशंस दिया हुआ है. तो लेट्स सी दैट फर्स्ट. See, this is the urban sex compositions of the Zimbabwe, Canada, Brazil, Nepal, Finland and New Zealand. If you see in the this checked line, checked bar shows the rural, and the this bar shows the urban population. So in the Zimbabwe, this is the females per 1,000 males. In the Zimbabwe, in the means in urban areas there are the 1032 females per 1000 people. मतलब जो अर्बन एरिया है जिम्बाब्वे में वहाँ पे मेल्स 1000 मेल्स पे 1032 फीमेल्स हैं. और अगर रूरल एरिया में देखें वहाँ पर तो that is the 1080 that is the 1080 to 87 फीमेल्स पर 1000 पीपल. तो क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में फीमेल्स का कंपोजिशन या फीमेल्स का जो रेशियो है, नंबर है, वो ज्यादा है. सेम अगर हम कनाडा में देखें तो इन द अर्बन एंड इन द कनाडा द फीमेल्स आर मोर, नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर इन द
अर्बन एरियाज के अंदर यहाँ पे ज्यादा फीमेल्स हैं, जबकि फीमेल्स जो मेल्स यहाँ पे कम है। जो अर्बन एरियाज के अंदर फीमेल्स का ज्यादा नंबर है, और अगर रूरल एरियाज के देखें तो फीमेल मेल आर मोर इन द रूरल एरियाज में मेल ज्यादा है एंड फीमेल्स कम है। कनाडा एंड इन द ब्राजील इन द सेम इज इन द ब्राजील के अंदर भी जो सिटीज के अंदर वहाँ पे फीमेल्स ज्यादा है और मेल कम है, और रूरल एरियाज के अंदर मेल फीमेल्स कम है और मेल्स ज्यादा है। क्योंकि अर्बन एरियाज में अगर इसका देखें हम जिम्बाब्वे का, तो यहाँ क्या हो रहा है, 902 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर। नेपाल it is the reverse than the this country Canada and Brazil. Here in the urban areas females are less and the males are more. Same in the rural areas females ज्यादा है मेल्स कम है। फिनलैंड का देखें, सिटीज के अंदर फीमेल्स ज्यादा है मेल्स कम है, गाँव के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स कम है एंड मेल्स ज्यादा है। सेम इन द न्यूजीलैंड। तो अगर इस ग्राफ के हिसाब से हम इसको अगर कंक्लूड करें, अगर इसको हम एनालाइज करें, तो क्या हो रहा है, it shows the rural urban sex composition of selected the rural and urban differences in the sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite of those African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal respectively. अगर हम जो यूरोपियन कंट्रीज या जो कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे लाइक फिनलैंड का वहां पे देखें तो क्या हो रहा है, वहां पे सिटीज के अंदर फीमेल्स का नंबर ज्यादा है और मेल्स का कम है। तो ये जो अफ्रीकन और एशियन कंट्री जैसे लाइक जिम्बाब्वे नेपाल, उसका उल्टा है। अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में क्या है, सिटीज के अंदर फीमेल्स कम है एंड मेल्स ज्यादा है, और जो कनाडा एंड फिनलैंड जैसे कंट्रीज वहाँ पे सिटीज के अंदर फीमेल्स ज्यादा है। तो उसका रीजन व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है मेल्स मीन्स सिटीज के अंदर कम है, उसका रीजन है, और रूरल के अंदर मेल्स ज्यादा है। The region is the in the females number. The excess of females in urban areas of USA, Canada, and Europe is the result of influx of female. Just a minute. See, the excess of females in urban areas of USA, Canada, and Europe is the result of influx of females from the rural areas to avail of the vast job opportunities. The reason is that in these countries, the females have migrated from rural areas to the urban areas for the vast job opportunity, because they have the large job opportunities in the urban areas. And in these countries, जो developed countries, जहाँ पे farming is mostly mechanized and remains largely a male occupation. इन देशों के अंदर जो developed countries है, वहाँ पे जो फार्मिंग है वो क्या है, मशीनाइज्ड है, या जो दूसरे प्राइमरी एक्टिविटीज है वो ज्यादातर मशीनाइज्ड है, इसलिए वो मोस्टली दो ज्यादा फीमेल मेल डोमिनेटेड occupations. इसका opposite अगर by contrast the sex ratio in the Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of the male migrations. और इसका उल्टा जो एशियन कंट्रीज है वहां पे जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज द मेल डोमिनेटेड। उसका रीजन है that because the male migrations from the urban to cities, क्योंकि इन देश यहाँ पे जो
ज्यादातर जो गांव में एग्रीकल्चर है, प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, तो जो मेल्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सिटीज की तरफ माइग्रेट होते हैं, इसलिए सिटीज में मेल पॉपुलेशन बढ़ती है एंड फीमेल्स कम रहती है। इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट द कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन, और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जो जस्ट लाइक द इंडिया, जो इंडिया countries like India, the females has the participation in farming activities in the rural area is fairly high. जो rural females का जो participation है farming के अंदर वो बहुत ही high है rural areas में. And the shortage of the houses, shortage of housing, high cost of living, paucity of the job opportunities and lack of security in cities discourage women टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जो फीमेल्स की जो एक तो सिक्योरिटी का इश्यू है, और जो लैक ऑफ द सिक्योरिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, शॉर्टेज ऑफ हाउसेज, वहां पे रहने की कमी की वजह से जो फीमेल्स है वो सिटीज की तरफ कम माइग्रेट होती है। So this was the thanks, and in the next video we will go for the another topic.